हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये अब तो इंटरिम ऑर्डर है, हमारा केस है, इस पूरे एक्ट का एक फाइनल डिसीजन ले, इस एक्ट का पूरा फाइनल डिसीजन लीजिए आप। वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे भारत के पूरे देश में सिर्फ 7 प्रदेशों ने किया। जब सर्वे होगा तो अगर मालूम होगा कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी भी बोली नहीं, अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, तो जो उस पर एंक्रोचर है आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं आपको। और फिर आप वक्फ बोर्ड में इलेक्शंस नहीं होंगे, नॉमिनेशन होगा, तो भारत में ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो किसको रखेंगे और किसकी प्रॉपर्टी बचेगी बताइए। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा दिया ही नहीं वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का। The Supreme Court has not stayed the entire Waqf Act as we know. So do you think the opposition has failed to win the case or? No, it is not a question. The finality of the act of the decision of the act has not been decided. It's only an interim order that has been given by the Honorable Supreme Court. We are of the opinion that let us hope that they quickly decide the whole issue on the act itself. So we are saying what we are. मानना यह है कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ, सुनिए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कानून बनाया आपने इस तरह से। कानून हम इस अरे कानून, भाई देखिए, कानून को आपने ऐसा बनाया है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दो। आपने कानून ऐसा बनाया है, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसी दिन लाया गया। मैं फिर से अपना चार्ज बीजेपी पे लगा रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने शिया बोरी, दाऊदी बोरी मुसलमानों को इस्तेमाल करके भारत के सबसे दौलतमंद आदमी को, जिसने खोजा वक्फ के ऊपर, यतीम खाने के ऊपर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाई, उसको रिवार्ड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बोरी मुसलमानों का इस्तेमाल किया। हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं उसको कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया, बोरी के दुकान पे दौलतमंद की फातिया हो चुकी है। ये हुआ है। इसीलिए मेरे जो एप्रीहेंशंस हैं वो वेल फाउंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये जो होगा ना, इलेक्शन नहीं होगा वक्फ बोर्ड का। पहले इलेक्शन होता था किसका? मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, और जो जुडिशियल साइड में जो होते थे। अब इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट किसको करेंगे? दूल्हे भाइयों को करेंगे, पूरे बीजेपी के जितने दूल्हे भाई हैं, और उसमें आप अपने लोगों को लाके डालेंगे। कैसे आप उम्मीद करेंगे? आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जो बुलडोजर से घरों को तोड़ रहे हैं, जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं? कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? And as far as Supreme Court not giving a stay on the 5th schedule, 6th schedule tribal land, I don't know what will happen to Mr. Hamdullah Saeed. Mr. Hamdullah Saeed is an honorable member of parliament from Lakshadweep. He is a Muslim. His religion is Islam. What will happen to his freedom of religion? Please tell me. I don't know. Thirdly, all the Waqf board, state Waqf board, there will be no elections because the act says there will be no election for MLA category, MP category, Mutawalli category, and also from judicial side. It will be the BJP because they are in power in major states of our country. So they will be appointing all their own good Johnnies. That is why I feel that even after this today's interim order,
BJP will try everything within their means to ensure that the Waqf properties are not protected. BJP will try their utmost best to ensure that after the Limitation Act is going to be applicable, there are so many Waqf properties. If you read that report of the Parliament Committee, only 7 states have done surveys of Waqf properties. Now tomorrow there are many properties which are Waqf and there is no legal case. BJP will reward those encroachers by saying that there will be no stay on that particular section of 3D or 3, wherein protected monuments will not be Waqf. So what will happen to the case of Sambal now? Please tell me. What will happen to the case of Sambal? When did ASI come into existence? You have a protected monument, whether it is Dargah, Masjid, Khanqa, which has been Waqf. Now, Waqf board will not be the owner. ASI will be the owner now. So that is why I am of the opinion that we hope that the Honorable Supreme Court will decide the finality of the whole of this act, because in this interim BJP will try their utmost best. And why should there be 4 non-Muslim members? So can there be a non-Sikh member in the Gurdwara Prabandhak Committee? Can there be a non-Hindu member in various endowment boards? How is it? I don't know how Waqf board properties can be protected. If you have, if this thing is continued, in my opinion, Article 26 is a fundamental right. And in a charitable institute established by a particular person, his property is being given. Why should a non-Muslim or any religion, a person who does not profess religion should be there? So that we hope that the Honorable Supreme Court will decide this issue. And then Waqf by user. Honorable Supreme Court in Ram Mandir, Babri Masjid case had upheld Waqf by user. You are saying prospective there will be no Waqf by user. But what about the Waqf properties which are being enjoyed as Waqf by user for many years and centuries? You are asking for that deed. So I am very apprehensive that the BJP as a government, BJP as a party will try their utmost best to weaken the whole Waqf structure in our country. And their whole idea is that there should be no Waqf property in India. The whole country has heard. Why should there be Waqf in India? It is a क्या बोलते हैं वो बाहर का concept है. It is not. It is an alien concept, they say. That is why I am of the opinion. I am very apprehensive. So we hope that the Honorable Supreme Court will decide on the finality of this act. It's only an interim order. It's only an interim order.